जो है शांति है, होती नहीं है। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, जब तक न्याय नहीं होगा तो इक्वालिटी नहीं आएगी। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट एंड नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट to the identified and dignity of cultures and peoples. So, the process of taking decisions, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance. The group of individuals or the system that makes the rules and ensures that they are followed is called a government. Some of the more important rules are called laws. ठीक है, मतलब फैसले लेना समाज के प्रति, सही गलत का, न्याय होना, अन्याय होना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? लॉ और ऑर्डर के अंदर आती हैं। तो ये सब चीजें कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट, यानी कि सरकार, है ना। एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अपनी सेटल लाइफ जीने के लिए हमें शांति से रहना पसंद होता है, ठीक है। उसके लिए क्या है? हमें सरकार का होना जरूरी, क्योंकि सरकार लॉ एंड ऑर्डर बनाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मैनेज दिस कंट्री। जो सरकार जो है ऐसे लोगों का समूह होता है जो इस देश को मैनेज करके चलते हैं, इसको चलाते हैं। इट इज अ बॉडी ऑफ पीपल दैट मेक्स पॉलिसीज एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉ। ये एक जो है बहुत से लोगों का जो है एक हिस्सा होता है, जो उनकी पॉलिसीज के थ्रू ये सिस्टम चलता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग, हर देश का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग चीजें होती हैं। Forms of government to refer the institution and the working in these institution. When we talk about the forms of government, the emphasis is on analyzing the institutional forms and their powers and functions. Different criteria are used for classifying government, such as objectives, ideologies, and policies, the way in which power is exercised. Territorial distributions of power, the nature of the constitution and the nature of the executive agency. A scheme of such classification is given below. So kinds of government, तो गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले होती है पार्लियामेंट्री। नेचर ऑफ एक्जीक्यूटिव एजेंसी, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनिटरी, फेडरल। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल, rigid or written. Nature of exercise of power, democratic and authoritarian. Nature of executive agency, what is this? Parliamentary and presidential government, यानी कि संसद और राष्ट्रपति की जो सरकार होती है। The distinction between the parliamentary and the presidential forms of government is primarily based on the relationship between the executive and the legislature and the extent to which they are dependent or independent of each other. ठीक है, ये क्या है? दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर्ड अ हेड ऑफ द स्टेट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो है एक राज्य का जो हेड होता है उसकी जरूरत होती है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, as the decision about the head of government is taken on the basis of the number of members the political parties have in the legislature. In case some party has a clear majority, कुछ जो पार्टीज होती हैं उनकी मेजोरिटी एक होती है, the legislature, the leader of that party is nominated as the prime minister. तो इस जो है इस क्या कहते हैं, इस पार्टी का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। So sometimes many other parties support to one major party and select their leader for the prime minister. Such government is called coalition government. The executive in the parliamentary government is based on the party support in the legislature. The prime minister and the cabinet in Great Britain are good examples of this form of government. जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो इसकी मूल इकाई होती है। अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट, व्हाइल इन द पार्लियामेंट्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव emerges from the legislature. In a parliamentary system, the head of the government is different from the head of state. Distribution of power, यानी कि कैसे कैसे इनकी जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, when the entire territory is governed from one center of power, it is called a unitary government.
Chile, China and Great Britain are examples of such government. In a federal form of government, power is divided into smaller segments, each having its own government in addition to the central authority. Thus, there are two levels of governments in a federation, one for the entire territory and the second for the smaller territorial segments. Example of this form of government: India, Nigeria, Brazil, Malaysia, USA, Switzerland, etc. नेचर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, की प्रकृति और यहाँ का संविधान. फ्लेक्सिबल एंड रिगिड, द गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर्स एंड फंक्शंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द यूनिट्स दैट डिसाइडेड टू कम टुगेदर पुट forth the terms on which such a union is acceptable to them. यानी कि जो सरकार और पावर होती है ना, किसके अनुसार चलते हैं उसके फंक्शन? संविधान के अनुसार. ठीक है, संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है अपने लॉ और ऑर्डर बनाती है. इट टेक्स शेप इन ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर and reflect the political choice of ideas and institutions of that time. Flexibility and rigidity of a constitutions are reflected in posts and amendments as well as in complex set of institutions provided in it. Written constitutions have tendency to be somewhat rigid in so far as they provide for a specific procedure of amendment. Nature of exercise of power: democratic and authoritarian. Democratic यानी कि लोकतंत्र. The democracy is a form of government in which the ruling power is vested in the hands of the people and the government is answerable to the people who can change it through constitutional means. तो जो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म होती है ना, ये लोगों के द्वारा होती है. लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र. Authoritarian government places restrictions on the activities of people and their groups. These restrictions apply especially to these activities that relate to the state. In this government, a family, a small group of people, particular social or religious class, for a strong political party controls all the decisions made in the government. People cannot put up any question to the government. They cannot raise any question about the political bodies and their way of functioning. Society is viewed as hierarchical with the leader or the party at the top. तो उसका जो नेता है उसको ऊपर और टॉप पर ले जा सकती है. 3 organs of government. Number 1 is the legislature is the organ that makes new laws. ठीक है, नए कानून बनाना. Sometimes it also updates or removes existing law. This is done by an assembly of representative of the people. We will soon see how the Indian system works. ठीक है. Number 2, the executive is the organ that implements the laws. This includes the head of state, who may be a president or a prime minister or a chief minister. The ministers and many agencies responsible for enforcing law and order. In our example about the agency is the cyber police. The judiciary is the system of courts which decides whether someone has broken the law, and if so, what of course of action should be taken, including punishment if necessary. Some time is also examined whether a decision taken by the executive is right or whether a law passed by the legislature is well conceived and fair to all. In any good system of governance, these 3 organs must be kept separate, although they interact with each other and work together. This separation is called the separation of power. यानी कि पावर का सेपरेशन ऐसे होता है कि सबकी अलग अलग पावर होती है. किसी को कुछ पावर मिलती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ. ठीक है. It is intended to provide a system of checks and balances. This means that each organ of the government can check what the other is doing and restore balance if one organ acts beyond its expected rule. 3 levels of government. सरकार की जो है 3 लेवल, वो क्या क्या है? Any government operates at 2 levels at the best, at the least, local and national. In many countries, including India,
It functions at 3 levels or tiers: local government, state government and central government. ठीक है, लोकल जो अपनी ये सरकार है और राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है. Each level deals with different matters. जो ये जो तीनों का जो लेवल है ना, ये अलग अलग तरह के मैटर सॉल्व करते हैं अपनी उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स. भारत में जो क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट. इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर ए फ्यू डेज, there is a flood in a part of a district. If it is not too severe, the local authorities may be able to deal with it. If it involves several towns and many villages, the state government will step and send rescue teams to help affected people. अब क्या होता है कि अगर जो जैसे कोई बाढ़ आ जाती है कि छोटे छोटे उसमें गाँव में, शहरों में, तो उसको जो है लोकल गवर्नमेंट हैंडल कर देती है. आफ्टर दैट अगर जो है लोग may be able to deal with it. Okay, if it involves बहुत सारे कस्बे, बहुत सारे शहर हो जाते हैं उसमें इंक्लूड, तो फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपनी टीम्स को भेजती है और वहां पे वर्क शुरू करती है. ठीक है, but if it's a massive flood affecting vast areas, the central government may also come to help by sending relief supply, the army, etc. These are the 3 level. Again, the table on the facing page provides in summary a general framework of the main functions of the government's 3 organs at the national and state levels. So, judiciary, all India, Supreme Court of India, state level, High Court. 2 house, Lok Sabha and Rajya Sabha. इसके अंदर क्या क्या आती है? लोक सभा और राज्य सभा formulate national laws. 1 state assembly और विधान सभा. Not that most states have a single assembly. A few states have 2. Executive, central government led by the President of India, nominal head and supreme commander of the India. Armed force prime minister as the executive head. State government led by the governor, nominal head, chief minister as the executive head. So functions and responsibilities of the executive. The list is not executive. Defense, foreign affairs, atomic energy, communications, currency, intercaste commerce, education, formulation of national policies. Okay, state government के अंदर क्या क्या आते हैं? Police, law and order, adaptation and implementation of laws made by the central government at the state level, public health, education, agriculture, irrigation or local government. Next topic is democracy. So let's talk about the democracy. You may have noticed that we earlier mentioned representatives of the people. This is one of the foundation stones of the system of governance adopted by most countries the world. Democracy होता है लोकतंत्र. ठीक है ना, जनता के द्वारा बनाया हुआ तंत्र. The word democracy comes from 2 Greek words, demos meaning people and kairos meaning rules or power. So democracy literally means the rule of the people. ठीक है ना, लोगों के जो है रूल. But can all people actually rule? It is clearly not possible. ये तो है ही नहीं. Imagine there is a problem that your class wants to bring the attention of your school's principal. Maybe there is something wrong with the classroom or with the school's infrastructures, or perhaps you would like to propose a certain date for a field trip. Will the entire class go to principal? No, it would clearly not be practical. In many schools, classes have a class monitor. है ना, पूरी क्लास मिलके थोड़ी जाएगी अपनी कुछ प्रॉब्लम बताने. तो एक क्लास मॉनिटर को बनाया होता है और वो जो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, whom the whole class elected, where even if there is none, one representative can be selected for this specific purpose. It will be enough to send the representative to the principal. It is the same principle at the state or national levels. Through elections, people vote for representatives who will be the elected members of their respective assemblies. So they are generally called members of legislative assembly or MLAs at the state level and member of parliament at the national level. All these members
discuss laws, problems and solutions in the assemblies and through dialogues and debate try to convince each other whenever there are different opinion. ठीक है, क्या होता है कि जो सारे जो मेंबर हैं वो सारे लॉज और प्रॉब्लम्स वहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशन निकालते हैं, एक दूसरे को अपने ओपिनियन जो है शेयर करते हैं. लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इट इज ऑल्सो the world's largest democracy with some 970 million voters in 2024. In principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these elections. ठीक है ना, इलेक्शंस के थ्रू, अब हम लोगों के थ्रू तो चुनाव होता है ना, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उनको राइट मिल जाता है इलेक्शन करने का, यानी कि हमें अपना नेता जो है अपना मेंटोर खुद चुनने का. कॉन्स्टिट्यूशन, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारत का संविधान. ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नमेंट्स derive their powers from the constitutions and run the administration of the states. Any government cannot do against the constitution. जो कोई भी सरकार है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं चल सकती. जो संविधान में चीजें हैं, जो संविधान में रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही पूरी सरकार चलती है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द यूनिट्स that decide to come together put forth the terms on which such a union is acceptable to them. The constitution consists of the detail of governmental forms, their respective powers as well as limits on those powers. All the institutions of government work within the provisions of the constitution. Constitutions are various types such as rigid and flexible and written and unwritten constitution. Constitution of a country is an axle of the government. ठीक है, क्या होता है कि जो संविधान होता है ना, वो देश का एक तरह से हथियार होता है. ऑल द फंक्शंस, राइट्स एंड ड्यूटीज आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सारे फंक्शन, सारे अधिकार, सारे कर्तव्य किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? संविधान के अकॉर्डिंग. एनी गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रन्स इट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज गिवन ए फाइनल शेप in 1787. So the Constitution of India was a result of long careful consideration by the members of the Constituent Assembly between 9 December 1946 and 26 December 1949. Written constitution is the most important for the well administration of a state. The aims of the people and vision of leaders are contained and protected in the constitution. This helps avoid any situation of conflict. The Constitution of Great Britain is the unique example of an unwritten constitution. The all topics like democracy, constitution, law, order, all topics are covered in this chapter. I hope you all are very well and enjoyed all. So, thank you.